नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आज शाम आपको रंग संवाद में आने के लिए हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपको नहीं होना चाहिए था, गड़बड़ा गया वाक्य। और बहरहाल भाई ठीक नहीं जानते हैं, नटरंग प्रतिष्ठान वर्षों से रंग संवाद की ये श्रृंखला चला रहा है और इसमें हबीब तनवीर, मास्टर फिदा हुसैन, महेश एल कुंचवार, फैसल अल काजी, अनामिका हक्सर, अरविंद गौड़, राजेंद्र नाथ, नंद किशोर आचार्य, विजया मेहता, सतदेव दुबे, राज बिसारिया, जोहरा सहगल, नीलम मान सिंह चौधरी, बी जयश्री आदि के साथ संवाद हो चुका है। हम इन संवादों के माध्यम से पर्दे के पीछे क्या होता है उसको कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कल जैसा आपने देखा, रैना साहब के यहाँ तो पर्दा होता नहीं है, सारा खेल क्या बताएं, खुला खेल फरुख्ताबादी है, तो पर्दा तो था ही नहीं। तो एक लंबी यात्रा का थोड़ा हिस्सा उन्होंने बहुत रोचक ढंग से हमारे सामने पेश किया था। आज आप सुनेंगे अनुराधा कपूर को। नटरंग प्रतिष्ठान के जो अनेक उपक्रम हैं उनमें से एक ये भी है कि हम अपने समय के बड़े रंग निर्देशकों पर पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं। पहली पुस्तक सत्यदेव दुबे पर थी जो शांता गोखले ने संपादित की और नियोगी बुक्स ने उसे प्रकाशित किया है। आज संयोग से दूसरी पुस्तक इस श्रृंखला की कावलम नारायण पणिक्कर पर आ गई है, इसे उदयन वाजपेयी ने संपादित किया है। तो इसके पहले कि रंग संवाद शुरू हो, हम बी जयश्री जी से आग्रह करेंगे कि वो इस पुस्तक का एक अनौपचारिक लोकार्पण कर दें। हालांकि ये अनौपचारिक क्यों कहा जाए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कहा गया तो मैं कह देता हूँ कि ये अनौपचारिक है। इसमें इन पुस्तकों में रंग निर्देशकों जिस पर पुस्तक है उसके बारे में सामग्री, उससे बातचीत और बहुत सारे और ऐसे ब्यौरे जो कि सामान्यतः एक साथ सुलभ नहीं होते। हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बड़े रंग कर्मियों पर बहुत कम पुस्तकें। हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी प्रकाशित की हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभिनेताओं पर या और जो रंगकर्म के दूसरे पक्ष वाले लोग हैं उन पर किताबें होना चाहिए। बहरहाल ये तीसरी पुस्तक बादल सरकार पर है जो कि कीर्ति जैन संपादित कर रही हैं और जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आएगी और फिर ये श्रृंखला आगे भी चलेगी, ऐसी भी उम्मीद है। पर इससे पहले कि रंग संवाद शुरू हो, हम जयश्री जी से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और इस पुस्तक का लोकार्पण करें। कपूर यो तो आजकल सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की निर्देशक हैं, पर निर्देशक बनने के पहले उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. और लीड्स विश्वविद्यालय से नाटक
और रंगमंच की कलाओं में PhD प्राप्त की और वो 1981 से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अध्यापन कर रही हैं। पढ़ने लिखने के अलावा उन्होंने पुस्तक भी लिखी है जो कि एम.क रैना ने सौभाग्य से नहीं लिखी है। वो नाटकों का निर्देशन भी करती रही और उनके प्रसिद्ध नाटक हैं उमराव, सुंदरी, एन एक्टर प्रिपेयर्स, घर बाहर, एक इंस्पेक्टर से मुलाकात, नवलखा, एंटीगनी प्रोजेक्ट, साहिब बीवी गुलाम, रोमियो जूलियट, जीवित या मृत, जॉन गैब्रियल बाकमैन आदि। जो दिलचस्प पक्ष अनुराधा जी के काम का है कि उन्होंने अपने समय के दूसरे अनुशासनों के कलाकारों के साथ महत्वपूर्ण काम किया है। यूँ तो रंगमंच को कलाओं का संवेद कहा जाता है और उसमें संगीत और चित्रकला इत्यादि इत्यादि शब्द शामिल होते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा विशेष रूप से दूसरे कला अनुशासनों के साथ काम किया है और इस तरह से एक नई दृश्य भाषा विकसित करने की चेष्टा की है। उन्होंने रंगमंच की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी विस्तार से लिखा है और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एक्टर्स, पिलग्रिम्स एंड गॉड्स, द रामलीला ऑफ रामनगर, और वो कैम्ब्रिज गाइड टू वर्ल्ड थिएटर और जर्नल ऑफ आर्ट्स एंड आइडियाज़ की सलाहकार भी रही हैं। उन्हें वर्ष 2004 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय रंगमंच को उनके अवदान के लिए अपने पुरस्कार से भूषित किया है। तो ऐसी हैं अनुराधा कपूर जिनसे आप बातचीत करेंगे और जो आपसे बातचीत करेंगी। और मैं अब दृश्य से हट जाता हूँ, अनुराधा जी से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ आएँ और जो कुछ करना है सो करें। I am very grateful to Natarang Pratishthan to have given me this opportunity to share some ideas about a process of work. I think it's a privilege for me to be here this evening on the dais of these long and very, very important dialogues that Natarang Pratishthan has set up. I think it's very important because many times I think dialogues seem to vanish from the theatre and a lot of single kind of speech remains. So I do hope that this evening's talk is more like a dialogue and less like a piece that is only one-sided. But just a little beginning, I think like most of us, I came to theatre as somebody who did theatre in school, and that was the modern school just down the road from here, under a very affectionate and rather strict aunt of mine who was an actor at the Delhi stage in the 1950s and 60s, Uma Sahai, who used to be part of the Three Arts Club. And then after that, under Mr. Vedvyas, who was part of the Delhi Art Theatre, and Narendra Sharma ji, who was then a part of the modern school. But my really a kind of deep and enduring love for theatre began in 1968 with the coming of Om Shiv Puri to modern school. And I remember with the kind of halo only one remembers personality, the kind of personality that Shiv Puri was, that when he came, he had been injured in an accident while playing Tughlaq, and he used to limp into school teaching Hindi, and we used to sort of follow him like star-struck young people. He gave me the opportunity to work with him and Sudhaji in the first version of Aadhe Adhure that opened sometime in 1968. I had just joined college, and some of my co-actors are here this evening, Banwari, Dinesh Thakur and Richa Vyas, who were in the very first version. Under there, the very, very strict eye of Mohan Rakesh, who wouldn't let us move an inch without his very close
as I remember, that through the school, the only serious business I seem to have done was working in plays. And that carried on through my college, and that was the only serious business I seem to have done through my BA and MA. One part of it entirely with Deshantar, which was a wonderful school for me, and I was able to travel a lot with Deshantar between 1968 and 1973, when Deshantar became less active, and across the length and breadth of India, many tours with Adi Adure and other plays. And the other aspect of that serious business of theatre was beginning to work in Miranda House, where I was a student, on plays. And I think it connects with what M.K. was saying yesterday. The first play that we tried to do as a student body in Miranda House in Hindi was The Mother, translated by Balraj Pandit. The set was by Bansi, and it had Maya Rao in the title role, Rajiv Bhargav and Sabina Mehta. So we were all similarly inclined those days to work with breadth. And I remember that Bansi had worked on the set, and it was supposed to revolve and rotate. The walls were supposed to change over. The wheels were too small, so we all were at the back of the set holding it so that it wouldn't tip over. So that was one of the first memories I have of working in college on a Brecht project, which actually the interest in Brecht remained through college. And after that, as Ashokji has pointed out, I had some years in England again working on directorial projects. I'd like then to point out that in the late 70s, the very major, I think, interest that changed a lot of my views on theatre was a long stint of work in the street theatre. And that was the time that there was a women's group formed called Stri Sangharsh in 1979, and in that group, one of the first plays that we thought we need to devise was on dowry burning, which was at that point an extremely frightening and heinous activity. So it was a play that was devised with activist women in Delhi, as well as actors, as well as musicians. And it was a play that opened in Indraprasth College under the banner of Stri Sangharsh, and then it ran for several years. Again, it was a collaboration with, as I said, activist women, as well as with actors from various kinds of disciplines. Maya Rao was one of them. Urvashi Butalia was one of them. The late Sudesh Vaid, who has written a lot on Sati, was one of them. At that point, I think it was very important to be able to work on a theatre, space in the theatre that was disconnected with the proscenium. There were many attempts at other issues on this street theatre moment, and at that time the other plays that were running was the very famous performance Aurat from Jannat Manch, and in Maharashtra Mulgi Zali Hai, A Girl is Born. So I'm saying it was a moment that all of us were working on similar, with similar intentions, similar passions, similar interests. But some of the interests that have then carried on, that I'd like to put before you as something that has been part of a journey, were three things. And I think that has remained an interest from that time, whether it be work with a project that my group has done, or I have worked with young people or with students. And I think central to that is a notion of collaboration. And I would say the notion of process, because collaboration actually seemed to me possible only if you open the process and not see theatre making as a single person's view. And I think that in some senses, maybe we can talk about that later, is connected to my thinking of myself as somebody who's working in theatre, who's a woman, and who might want to look at process as being important
and as being open, so that the idea of process is an interchange rather than my particular view. And this is a thing that I hope I can come back to later with the images that I have. So street theatre brings one notion that the performing spaces need to be built and need to be made accessible, readable, interchangeable. So it's not always, a proscenium is not necessarily always bad, but the relationship between a proscenium could be of interest. So the collaborations are also, from that time onwards, an interest in the visual aspect of theatre. We felt at that time when we did Om Swaha that a visually interesting street performance would catch the attention of the audience faster than an oral, textual performance. That was an idea, but that seemed to have carried forward into all kinds of works, to look at the visual as being one of the most important interests that I've had. And also not just a collaboration with artists, visual artists, but a collaboration textually also to make playmaking a part of process into what would be a creation of a text. And there's been a long relationship on that with Gitanjali Shri, who I'm very happy to see here. And almost all our early works have been collaborations on texts that have been created. And I think I would be right, I'm not sure, Gitanjali will give her view, but I think I would be right in saying that most of the work has begun with a visual seed. That we look at a text and we find a visual seed in it, and the sequences develop from that visual seed. And that has been in some ways of constructing many of the texts that I have attempted. The collaborations have also been with many painters, and I have had the privilege, I think, of working with, a privilege and honor of working with painters like Bhupen, of whom I have a small clip which I'll show you, Nilima Sheikh, as well as Nalini Malani. And also in these three plays particularly, where there is a visual seed which the painter, the visual artist, brings back to the process of making a play. So many times I have found that, I remember in Umrao Jan, which was the first collaboration with Nilima Sheikh, she said, I will be looking at miniatures, I will be looking at drawings, I will be showing those drawings to the actors so that they can find ways of relating to the tradition of the miniature, but not mimicking it. So in some senses, I'd like to say that the interest in creating a visual language with the help of artists, visual artists, whether they be visual painters or whether they be video workers, was an interest also in creating a set which has or a space or a mise en scène which is running parallel to the text. I found that all of us who were working together at that time were not interested in, perhaps, and the word is wrong, not interested, but the utility object on stage, the chair, the table, the door, or architectural features of a space at that time were not something that we were seeking to put on stage. But what we were putting on stage was either a mental space, which is what we tried in Umrao, or a quotation from a tradition of theatre curtains, especially Raja Ravi Varma, which Nilima Sheikh and Bhupen Khapkar tried in Sundari, or materializing a conflictual space, a space where a lot of fight and oppression and violence takes place, in Giddhare, where Vivan Sundaram made a boxing ring with linoleum strips on the floor, so that on top it looks like a Tayyab Mehta painting. Equally, the interest in objects, which has been enduring interest, which has been one part of a thought that acting and the object is something that is closely connected. Nilima Sheikh
was able to make a series of toys and objects for a production called Navlakha, which it was entirely based on objects of various kinds that were set up and shown on the stage, sometimes completely arbitrarily. So what I am seeking to say at this point is that the early work, which is the 1980s to the middle 19th, or almost all the way till late 90s, is interested in the visual language and object, and side by side how a collaborative text can deal with the body of the actor. And I just would like to bring in three references here. When we were doing Umrao, Uttara was doing Umrao, and when Uttara was looking at the miniature paintings, she was saying often, should I be behaving like that? But the text of the play is completely the opposite. It is about a woman, the kind of courtesan narrative, which is in fact always talking of beautiful courtesans, cultured, who have people learning from them. But at the end of the narrative, in a courtesan narrative, it always ends similarly, where the courtesan says, as in the Umrao text, Randi, tum ye mat samajhna ki tumhe koi pyar karega. That's the last courtesan speech, not just in Umrao Jan, but in something like a novel called Nashtar. Now, that means that it is a convention to end like that, but we were not ending like that, and I have a clip, and Gitanjali made a speech in which, as she grows older, she wants to do more and more things. She wants to read English. She wants to travel on a train. She wants to think and dream. She wants to know whether there are more opportunities to learn new things. She wants to fly a kite. Now, it ended on that point, but the background remained a miniature. So there was, I think, some manner of dialogue, or maybe even a little collision, or maybe even a little, how shall I say, not necessarily a fitting visual narrative. It was very beautiful, but it was not the beauty of the miniature, and the text was at odds. And I think that has been, in some senses, a running interest. And let me say that this interest in how an actor negotiates a space that is visually defined, not in the usual sense. माने ये नहीं है कि एक सेट है और आप उसमें exist करते हैं as a character, but एक space है जिसमें आपको mental space भी एक तरह से दर्शानी होती है, but the body as part of, let us say, a curtain, which is something that we tried in Sundari. Nilima Sheikh and Bhupen Kakkar were very interested in working on the Sundari project. Nilima, because she's interested in Raja Ravi Verma, and when I show the clips at the end, she made a very, very large 18 feet by 6 feet curtain of Raja Ravi Verma quotation, and against those curtains the actors were supposed to perform. Now, are they part of the curtain? Are they absorbed in the curtain? Is the curtain a background, or is the curtain a foreground? Were all questions that we asked ourselves during Sundari. And part of that then also gets reflected in the making of the text. And I'll again quote two experiences, both from Sundari, which comes in 1996, and Umrao, that comes in 1992-93, is that none of the characters, the question that Uttara asked me, क्या मैं इसको miniature painting की body language को मैं अपने में उतारूं कि नहीं, साथ ही साथ उसमें ये भी सवाल था कि उसमें इतनी सारी soliloquies थी जिसमें एक भी soliloquy दूसरे से मैच नहीं करती थी. It was a contradiction. तो एक में वो कहेगी मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई, दूसरी में वो कहेगी कि मैं करवट बदलती हूँ, मैं नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ. So a kind of multi-focus on the character, and I think that multi-focus probably started because of the of collaboration, because many of the texts were built by
the process of the writer, and in this case Umrao Gitanjali Shri, again Sundari Gitanjali Shri, and some sections written by Dinesh Khanna, that they were watching the actors make a scene and then producing the text afterwards. So ये जो collaboratory nature of opening a text was also very much a part of those projects. I think it would be to, I would say, open the text, to relocate it. It is not about a single narrative strand, but multiple views on one character. And I think that's where an interesting dialogue took place between Uttara and myself. Uttara, very much a person, an actor who's interested in, like M.K said yesterday, wants to know what is the motivation of this speech, why are we saying it, why am I doing this. But when she's given a whole series of soliloquies which are contradictory, how she looks at it, how does she deal with it. And I know there were lots of questions, but what she got interested was, we were not interested in a through line of character, we were interested that Umrao should be looked at through many aspects, like a painting in which it looks, or a photograph which is spliced this way, this way, this way, this way, so that what Umrao you make in your head is an Umrao that you make in your head and isn't right out there. The similar thing happened with Sundari. उसमें भी ये कि character अलग अलग किस्म की speeches, अलग अलग किस्म के dialogue और interactions that don't necessarily sum up to one character. And in Sundari, I think that's a very interesting moment, because अब आप जब सुंदरी के बारे में बात करते हैं तो क्या आप जयशंकर सुंदरी के बारे में बात करते हैं कि सुंदरी के बारे में बात करते हैं. इट्स अ फीमेल इम्पर्सनेटर, इट इज द लाइफ, इट बेस्ड ऑन एन ऑटोबायोग्राफी. तो ऑलरेडी यू हैव मेनी मूव्स. यू आर टॉकिंग ऑफ जेंडर, यू आर टॉकिंग ऑफ एक्टिंग, यू आर टॉकिंग ऑल्सो ऑफ सेइंग दैट यू आर ऑलवेज इन दैट प्ले थ्रू द ऑटोबायोग्राफी टॉकिंग ऑफ अ फिक्शन. जयशंकर सुंदरी अपने आप को अपनी ऑटोबायोग्राफी में जैसे पेश करते हैं, तो हमें वो सारा वक्त देखना पड़ेगा कि क्या वो एक कैरेक्टर बनता है, और जयशंकर सुंदरी में वो तो बिल्कुल ही नहीं बनता. बिकॉज आफ्टर ऑल, एज अ मैन, ही इज राइटिंग अबाउट हिज लाइफ एज अ फीमेल इम्पर्सनेटर, एंड ऑल द लव्स एंड हर्ट्स एंड experiences he has as a female impersonator, while understanding that he's talking about a fiction. तो हमारे पास कई layers थे उस नाटक में. तो उसमें भी one of the attempts that we found to do through improvisation was to have three Sundaris, many repetitions in the character, but also split from each other, so that age, youth, age, middle age, all the problems of being so many characters on stage was achieved by giving three characters the role, and also achieved by giving a sequence which I think is probably one of the most a sequence we worked at a lot, and a sequence I think that was interesting to watch was a make-up sequence where the three boys sit in make-up in front of the audience, transform themselves into the women, into one woman as it were, into Sundari, and exit into the wings, which is what the stage is. तो आप बैक स्टेज को फ्रंट स्टेज में लाके उसके जो मैजिक और आर्टिफिस और एक तरह से उसका जो थिएटर का बैक जो पर्दा है, द बैक स्टेज इन फ्रंट स्टेज, सो दैट यू कैन सी हाउ अ कैरेक्टर इज मेड, नॉट entirely what a character is. This interest in acting and performing this kind of character or this kind of role has been a running concern, and I think that is a concern in some senses about gender. And किस तरह से फीमेल बॉडी को आप स्टेज पे ला सकते हैं, उसके बारे में सवाल कैसे उठें, या फीमेल बॉडी, वो फीमेल इम्पर्सनेटर की बॉडी और एक उत्तरा बावकर की बॉडी किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. It's a running concern, and it has a kind of, let's say, a chapter 1 and a chapter 2. Sundari was done in 1996-97, and before that there was a small play called The Job that was done in collaboration with Nalini Malani, and that is about a male impersonator and the dangers of being a male impersonator. And I found that quite interesting, because female impersonator की तो बहुत honored history है, पर
मेल इम्पर्सनेटर की बिल्कुल ऑनर्ड हिस्ट्री नहीं है. एंड द प्ले इज द स्टोरी, ब्रेख्ट स्टोरी ऑफ 1933 इज अबाउट अ वुमन हु टेक्स ऑन अ मैन्स जॉब and is found in the hospital in the women's ward, realizes she's lost the job, becomes desperate and is lost in the crowd. तो इस किस्म से like a twin, like two twins, except one is an honored history and one is a certainly dishonored life. तो इस तरह से gender has been a concern. सिमिलर टू दिस कंसर्न कि आप स्टेज पे अपने आप को किस तरह से पेश करते हैं, और इज अ लेट प्ले 2001 व्हिच वाज कॉल्ड मेकअप, जिसमें सारा एक्चुअली द कहानी इज ओनली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप. सो इट हैज 3 or 4 sections in which one is a woman, female impersonator, second is a rock star, third is a prosthetic makeup where a person totally changes in the as if it was Bal Gandhar. So I think one part of my interest in all these projects has been कि जो थिएटर का nitty-gritty है, nuts and bolts है, जो पीछे चलता है, उसको हम किसी तरह से सामने लाएं, उन मटेरियल्स को सामने देख पाएं कि थिएटर मेकिंग क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे क्या है, और कि ट्रांसफॉर्मेशन नीड नॉट बी ओनली वाया कैरेक्टर बट कैन बी वाया बॉडी. As I mentioned to you, one part of the work that has been there has been started by a visual seed. The other part has been started a lot, I would think, when I look back, by music. तो बहुत ऐसे इंस्टेंसेस मुझे ख्याल आते हैं कि जहाँ म्यूजिक becomes the driving scene. And a play that we did in 2004 called Centaurs, जिसमें हाइनर मिलर का टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट महमूद ममदानी की किताब गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम के साथ इंटरवोवन है. उसमें there was a live musician in dialogue with the actor, 2 actors, and both are here today, Harish and Rajesh, and it is about actually किस तरह से the music begins to drive the play. I would like to jump back to say कि सुंदरी में भी music began to be one of the most important driving features of the play. So the quotation in Sundari moves from Marathi Natya Sangeet to references to Sundari's voice. In Umrao, it was the Tawayaf tradition of music that was being quoted. But in something like Centaurs, what we are quoting is, it's a modern life, it's about city police, it is about lawlessness, it is about the breaking of bodies via violence. That had a music that was made by Chandran as a almost improvised on the saxophone at that time. So music has also driven many of the sequences that we have been able to devise. I would then say, and I just bring to you another element of how music has driven a scene. In the Antigone project, which I co-directed with Ayn Lal, there was a sequence in which Antigone walks out. Till that moment, all the music quoted is music of sort of avant-garde music of the 1970s. But end में हमने आबिदा परवीन का इस्तेमाल किया with the thought that somehow made the sequence before even the sequence was made. जब आबिदा परवीन को सुना तो वो उस sequence में आएगी और वहाँ पर इस किस्म का sequence होगा, was dictated by the music. I would like to therefore say that perhaps one of my major interests have been not to develop one signature style. That is to say कि ये नहीं कि आप ये कहें ये उनका नाटक होगा, ये उनका नाटक ऐसा लगता है. And I think that has only been possible because of a collaboration. Because अगर हम अलग किस्म के आइडियाज़, अलग किस्म के डिसिप्लिन्स के साथ अगर हम काम करने का हमें मौका मिलता है तो वो किसी भी स्टेबल ग्राउंड पे प्ले को रहने नहीं देता. That
neither my view nor Gitanjali's view nor Chandran's view nor Harish, Rajesh, Uttara's view, but all together we have to negotiate some lines जो कि हम पहले डाल देते हैं. So in some senses constrictions. This is the visual language, this is the music, this is a soliloquy. और इसको गीतांजलि कैसे लिखती हैं, या महमूद ममदानी का टेक्स्ट गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम को हम कैसे डिलीवर करें, all becomes part of a way of putting several artists together, and therefore in my opinion trying at least to make not a comfortable space but a kind of volatile, or how should I say it, a space जिसमें कोई stability नहीं है, but a space that is more about exploration and stretching boundaries. So I would say, perhaps, I'm not sure whether I can tie it up in some senses so neatly, but एक किस्म का signature style न होना या एक किस्म का corpus of work न होना, perhaps I would say connects to my being a woman and thinking about the fact that I would like to be able to do different things and find a different way of putting body and emotion or gender and acting together and not necessarily do it in one way. And that finally also connects up with a long and enduring relationship with popular culture. जब उमराव हमने किया था तो हमने ये सोच के किया था कि this is a popular narrative that has run across Indian cinema, across novels, and that it's a narrative that has a great resonance. Similarly, I think there are many other texts that have interested many of us together. I would say Nilima, who has been interested in figuring a body for the woman of today. I think that has been a running interest for me too. Figuring a body of the woman today, figuring a body of the man today, in which way can we see a contemporary body or a body related to the miniature or a body related to Raja Ravi Verma. The last point I'd like to make is that in such a case perhaps many standpoints come in, and in that standpoints I'd like to point out that we've also been interested in video and technology जो कि body को modify करे, not as just a pure actor but an actor modified, changed by technology. So in Centaurs we had very low end technology, cameras that are surveillance cameras mounted on glasses on the edge of on dark glasses on the edge of a glass on the table, so that the image that is projected is the image that we will get on surveillance cameras, let's say in airports. So wo Centaurs was set on an airport, that strange ground where you are only what your technology is letting you know. आपकी low end technology आपकी image अगर लेती है airport पे, तो अगर आपकी पासपोर्ट उसके साथ न मिले तो आपका दूसरी कंट्री में क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है. So you are being decided as who you are by technology. So there has been some interest in bringing in technology, and I have also been very much interested in the part of the dialogue between what happens to actors, what happens to performance in technology, and whether technology makes another kind of acting style. ये भी कुछ thoughts रहे हैं through the working of the work over the last 30 years. But I would like to say that I think that the most enduring interest has been कि आप collaboration से किस तरह से unstable ground में काम कर सकते हैं. दूसरा, उसी unstable ground में आप जेंडर को जब प्ले करते हैं तो यू आर नॉट मेकिंग स्टेबल कैरेक्टर्स men or women, but you are making characters that can read very differently in different times. And lastly, my own relationship to process would be that it is something that allows me to stretch the boundary and not necessarily present myself as one kind of person in one kind of work. In fact, it would be best to say कि एक authorial signature न होना, एक stylistic न होना has been some desire, I think, from many of my generation
in the theatre, I think, and also in let us say in writing or in feminist interests, where you say that I am not one kind of person, I don't have one kind of style, I would like it to be very different styles beginning from different points of view. I just would like to put this series of ideas in front of you, and I have some images, if then I could perhaps look at them and gloss them in the light of what has what I put forward, and I hope that we can then talk about them after we put them on. An early play, and that's Umrao, where the basic destabilization was done by the text, and it was also done by casting, where Uttara Baukar was playing Umrao, and we had an extraordinary experience in Bombay when Uttara was on stage, and among her audience was Rekha, and all of us were trembling in every part of the auditorium as to seeing what was the result of that. I have absolutely full belief that Rekha couldn't stand the play, but still I'll show you what was the thing. That's Umrao, number 6. The painting, as I said, was done by Nilima Sheikh. She worked with backdrop and with painted. करीब से देख जान के उनकी आप बीती सुन के तवायफों की रंगीन बहुत खूब तवायफ कहा और नजर याद आई। सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन वैसा तो था। हाँ, मैं तवायफ हूँ। आप देखिए जापान की ईशा पॉर्टिजान, वो भी तो तवायफ है। आप लोग तो एक शानदार कल्चर का प्रतीक है। ये तो रुस्वा कहिए, मैं उनकी नजर से क्यों देख रही हूँ? उन्हीं की बातें दोहरा रही। तुम दोहरा सकती ही नहीं, तुम्हारा वक्त दूसरा है, नजरिया दूसरा है। तुम देख रही हो रुस्वा को और मुझको। Nilima Sheikh had used the backdrop is of printers when they print on the cloth khadi, and it's just stitched a backdrop of waste cloth. अमीरन जो थी वो तो हमेशा रहो। उमरा जहाँ आता तो अमीरन पे जाना मुलम्मा है, पर दिल थाम के कहता हूँ क्या खूब मुलम्मा है। अच्छा, अब हमें भी बनाने लगे, जैसे हम जानते नहीं कि हसीनों में अपना शुमार नहीं। हमसे पूछो। मगर तो क्या, जो हमें है वो खुलूस हसीनाओं में कहाँ? बोलती हूँ तो हर लफ्ज़ पे वाह, हर सम पे आहा, एक जरा बता के मसला जो गा दिया, पहले मैं भी झूमने लगी। राजा के मकान के आगे हम खड़े, अगरचे हमारा सिंह बहुत कम है, मगर यहाँ आने के साथ किसी को Nilima Sheikh painted 8 foot by 4 feet screens that move. I'm just showing you that image for that. रोनी की हैसियत से बेवकूफ फंसे होते तो क्या बात बनती तुम्हारी? बेगम ने देखा है ये रोनी हमारे पिया से जो है ट्राई बात
सिस्टम से बाहर नहीं डालती। लेकिन रामदेव क्या हुआ था रामदेव के साथ? देखिए आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। हर कहानी का एक शुरू होता है, फिर बीच और फिर आगे। हर कवायद के किस्से का पैटर्न शुरू की भले घर की लड़की पकड़ी गई, बीच की कवायद बनके बिजली गिराती गई और अंत की बुढ़ापे में कदम रखते ही बदल गई कवायद जैसी लड़ी हुई। मैंने खुद तो बताया नहीं, आंखों देखा कानों सुना ही लिखा है। हम सब अलग अलग पलों को देखते सुनते हैं, तभी तो बनते हैं अलग अलग किस्से। नाम मोहतरमा, असल जिंदगी की मार से बनते हैं किस्से। चले अंदर, यहाँ की जिंदगी देखें। झरोखे, कपड़े की कमर, खलक की रस्सी की आवाज, किस तरह से हसीना ने ऊपर से कहा, दुपट्टे झटकाए और हाय कर सकती। This is a reference to the fact that Tawayafs only learned from women primarily, but it has never been put down as that. The gurus were seen as only men. आपको दिलचस्पी नहीं दूसरी चर्चाओं में? यौवन के ठाट तो देखिए, इनके मुंह में चेचक के बाद पढ़ी लिखी। हाँ, 8 बरस तक मौलवी साहब ने पढ़ाया, अरबी फारसी कुछ एक खिलाड़ी बनता थी। लफ्ज़ के मानी, फिक्रे की तरकीब नौके जुबान है, और फने मौसीकी में तो आपका जवाब। The very last scene in which Nilima made everything golden, and which is the last scene which actually is a scene about Umrao going old and actually looking forward to life. Just आशिया बदलेगा, तस्वीर बदलेगी, तो इसलिए न नेकी में बदी को कम जानो, न हंसने को रोने का खात्मा करो। और अगर रुक जाऊं तो इसे आखिर मत समझो, कि अभी तो बस हम अभी तो आप। What she says is हम करवट बदलते हैं, which is the beginning of a new life. I just, in terms of the work of Nilima Sheikh and Ghulam and Bhupen Khakhar, I would just have you look at Sundari, An Actor Prepares, which was 1997, where we had the opportunity and the honor of working with Bhupen. It was one of the, I think it was the second theatre project that he had done. Sundari. हम दोनों का जन्म उस एक ही वर्ष में हुआ, गुजराती नाटक मंडली का और मेरा, उसका मुंबई में, मेरा विसनगर में। जहाँ तक मुझे याद आता है विसनगर का आज ये कोलाहल भरा स्टेशन रोड उस समय निर्जन सा लगता था। छोटे से नीम के पेड़ वाला घर, आसपास पाटीदार, नायक, वजह, अन्य जातियों के मकान, बाहरी चमक कम, पैसा भी कम, पर अंतर शांति से समृद्ध। हमारे घर के कोने में मेरे दादा त्रिभुवन दास के स्वर तानपुरे के साथ खुलते हुए स्मरण हो आते हैं। Nilima Sheikh working on a quotation from a large curtain, Menika.
तो हम बाहर रखेंगे ऊपर एंड ड्रॉप बहुत फोल्डिंग हो गई बट थोड़े हाँ थोड़े नहीं in fact we should do it like that it should expand not ये वाला नहीं बहुत नहीं So the design in terms of the quotation of Raja Ravi Verma started before the play, and just as the soundtrack was almost built before the trip. This is an animation film that she did, which was playing in the theatre. This is the male impersonator getting ready to go to get a job as a chowkidar. Again, more or less the visual design of the play was made before some of the improvisations of the play, then improvisations of the play changed the visual design. In these large, what Nalini Malani called pistons, there was a change of costume. There was also, they had drawings which floated on the body of the actor. She is in the female ward after the accident. This is the sequence that she discovers herself in the female ward. It is a solo performance by Ritu Talwar, later by Pratibha Yashpal with a live pianist.
Chaukidar is waking up, living all her life as a male in a female ward. And once she is discovered that she is a female, a woman, she loses her job, and the indication in the Brecht story is that she is lost to the world, in other words, to prostitution. By the sweat of thy brow, thou shalt earn thy bread, was the last line of the text by Brecht about this woman in 1933. I'll show you one last clipping, which is of Centaurs, the Heinemüller text, जिसमें हमने महमूद ममदानी का Good Muslim, Bad Muslim interleave किया था. This was done in 2003 and 4 in reference to 2004-5 in reference to Gujarat and to stereotyping that was happening. Please. This is the text in which live music was in dialogue with the performance. This is Harish Khanna and Rajesh. Surveillance cameras are throwing that image. It was also the time that the images from Abu Ghraib had been circulated widely in the media. Rajesh is wearing his dark glasses, which are fitted with a camera. So now we see the world through his eyes. This was also the time that images of Saddam Hussein's arrest with his mouth open and a torch inside it were also part of our memory. The text is how the police makes you break the law and then catches you and punishes you because it thinks you need to. The police needs an assassin. गलती भी तो एक तुम तो उसकी उनसे इतना सच है कि हमने अपना कार्य पूरा करना ही
10 सालों से मैं जीवन या बेटा नहीं हुई हो तो बस तो सिक्योरिटी वही हमारा टारगेट है जो मुकम्मल हुआ हर समय के सभी मुकामों पर What the immigration officer is doing on the desk is being caught by a camera on his glasses. That is being projected on the screen. मैं जानता हूँ आवाम को आवाम की खिदमत भलाई पसंद नहीं सीधे तरीके से तो बस लो देखो हमारा ये प्यारा छोटा नन्हा सा शहीद चमकदार वर्दी पहने जिसके कांधे की गीतिया भीतों से उगने लगे पंख पंख So basically, in order that we may actually talk about some of the work shown here and any thoughts that you have. Thank you. Seen a very detailed and a very engaging presentation of a lifetime's work. Now is the opportunity for you to make brief comments, ask questions if you like. There is Anuradha Kapoor and there is you. So let it go. May I just suggest that you have Gitanjali here for a short comment that when you have collaborated with Anuradha, Yes, sure. Gitanjali so ji, that's कहिए. Gitanjali and then later one some of the actors. कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं. Never mind. I don't know where to begin. I've just been going on that journey with Anu's family, collaborating with her almost from the time that Anu began. So it's very much a journey I also sort of feel at one with. But as Anu was talking along, I had lots of nasty little personal comments, like when she said collaboration, and obviously she thought of herself as a very democratic person. I was remembering how we always said, not director but dictator. So it isn't as simple as all that, but yes, I think it has been a very, very fascinating way that Anu and all of us together have worked. And I think
I see somehow as one of the key words in our collaboration. I see that word as being dissonance. And I think, what Anu does, this is the other thing. She said we start with a seed idea, usually a seed image. Ask me. Because, she'd say something like, I see a purple light and I see a rabbit hopping across. I never said that, Gitanjali. I have never had purple lights and rabbits. Something that absurd. And then she said, come on, start writing. so the seed was often, something just completely unconnected with anything. And I think the important thing was she never tried, and we also learned never to try and follow a single line of story or follow a story which all of us were trying to feed into. We evolved together, and she was of course the main person, whatever she may say. But what she would do is want all of us to be very adventurous, start with something, but take a flight whichever way it would go, very much in acknowledgement of our independent Discipline. our independent medium. So we were allowed to really take as big a flight as we would with our medium and go as far away from maybe that seed. And then, the challenge would be to somehow bring things back from these very different areas and put it together with all these dissonances and create another sequence, a story and a harmony. And I think it was very fascinating how with this very adventurous, going this way, that way, unstable way of working, we actually put together something which held and had a shape and had, I think, some very wonderful things in it. So I was just thinking dissonance is something all of us really, really played with and learned the music and the story and the harmony and everything that could provide. Perhaps for the moment, that's all I would say. If she likes to put it like that, dictatorial disacknowledgement, never one rabbit and never one purple light, never. And so, but I think I would like to respond. I think Gitanjali is absolutely right कि हमें ये इसी से probably playfulness या adventure की aspect अगर गीतांजलि को कुछ चीज़ दिख रही है text में तो and she puts it in, then we all would have to deal with it. It may not necessarily, it may not stay, but it may stay also. But I just wanted to add, one of the absurd things Gitanjali has forgotten is when we were doing a sequence in Sundari and I said इसमें तो अलमारी है, so she said उसका क्या करेंगे, तो मैंने कहा वो अलमारी center में है. So she actually produced a text around that. So it is very much that kind of ability and dissonance. Thank you, Gitanjali. That I have come to know that how the fiction is converted into reality. In fact, you have the power and strength that the fiction can be converted into reality. Can you tell me that what step you are having with you that all the fictional stories have been converted into reality? And when I was seeing that, it was linking me just like a very, very true and actual things reflecting me on my mind. What is the saga behind that, and what is the tale behind that? That you have so much strength and energy and endure with you that you always make the thing in such a fascinating manner. कि हम लोग सभी कोशिश करते हैं कि कुछ फिक्शन को एक मूर्त रूप दिया जाए, कुछ मटेरियल रूप दिया जाए, तो ये थिएटर का कमाल है, किसी एक थिएटर डायरेक्टर का नहीं है. हम सभी ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये हो, पर मुझे ये लगता है कि वो सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी उसमें यही है कि आप किस तरह से कौन सी फॉर्म या कौन सा एस्थेटिक या कौन सा उस वक्त आप किस तरह से एक्टर को या एक्टर की बॉडी को या कॉस्ट्यूम को पेश करना चाहें. और उसमें ये मुझे लगता है, जैसे मैंने आपसे अभी कहा, कि ये थिएटर का ही कमाल है, ये और किसी आर्ट का नहीं है कि आपके सामने एक लाइव पर्सन है और वो आपको एक कैरेक्टर या एक कहानी आपको पेश कर रहा है, एक दूसरे बॉडी बना के अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी भी है, दूसरी बॉडी भी है और आपसे भी वो मुखातिब है. किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, दैट्स द फन ऑफ थिएटर. सो इट्स नॉट
only my work, it is the fun of theatre. Yes? Anybody else? To see the whole progress, but of course you didn't show us everything as it progressed, you showed us bits and pieces. So, but I would really like to know from the actors, since quite a few actors are in the audience, the way you start your work with, say, Gitanjali, how do you start work with the actors? What do you throw at them, to motivate them or to make them start improvising, for example? If you give an example, say, from any of your productions, how do you start working with the actors? Amal, it would be different in different plays, but a clipping, I'll start with a clipping I didn't show, and that was a Tendulkar play, which was Baby and Gid, which we joined together. And one of the things that I think we started with at that time was to say to the actors, especially Baby, that what are the clothes you wouldn't wear? Let's work with what you wouldn't wear. And when she came out with a particular kind of dress, a very demure salwar kameez, I think that gave us a push into developing a character from the other way, as it were, so that you're actually throwing a contradiction. And I think perhaps many of the actors are here and long time collaborators. I think it's maybe one kind of problem or one kind of exploration. In Sundari it was very much with costume and the sari that came up again and again and again as having to deal with something, costume. So that it's the dress that is making the character, not the character that is taking on a dress, and you forget the two things. And in the job, it was at the heart again and saying what objects will you use other than a razor, other than men's let's say what could be immediately connected with a man when you transform yourself. So actually putting as a detailed constraint, ये न use करके आप कैसे इस problem को solve करेंगे. But I don't know whether they are willing, but if they would be, I'd be very happy if Harish and Rajesh would share anything. And Banwari also. I have to improvise. We always have that, we have a cup of tea, biscuits, talk, discussion. Like we begin in the morning, 10 o'clock, let's meet at 10 o'clock, then beginning with tea, coffee, discussion, then we go for a little bit rehearsal, then break, then one more rehearsal at 10 o'clock at night, and then break. So this is the main thing. And then there was musician Chandran. He is also like, he is also not like that we have to keep doing rehearsal continuously. He also likes to share his idea about what he is feeling and where it's going to lead us. So through his music also actually we have improvised a lot. That was the main thing. And then what she said about the surveillance and the frisking and all this, what happened after 9/11, that was a main image we had at that time. वही as अमल जी कह रहे थे कि what she throws to the actors, she throws a lot of food and we eat. और तो हम लोगों का ये जैसे हरीश भी कह रहे थे कि हम लोग थोड़ा खाते हैं फिर रिहर्सल करते हैं फिर खाते हैं. बट क्या कहना चाहिए, आई एम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट अक्सर मतलब फन होता है एक्टर के लिए जो एक हमेशा एक लिमिटेड दायरे में काम हम सोचते हैं. स्क्रिप्ट उसको पूरा छूट होती है, जिसको कहें कि मैं जितना किधर भी जाना चाहूँ उसके लिए पूरी खुली एक छूट मिलती है. दैट इज द मेन थिंग आई पर्सनली फील.
तो मिलती है लेकिन वो क्या है वो जानना चाहते हैं कैसे जाते हैं कैसे रात भरते हैं कुछ क्या है। एक्टर्स के साथ तो जैसा बात चल रही है कि एक्टर्स के साथ आपका काम कैसे रहता है, मतलब कैसे आप उनको प्रोत्साहित करते हैं। और इनफैक्ट मुझे एक ही बार एक्टिंग करने का मौका मिला गोरा में, पर मुझे पक्का पता था कि अगर मैं दोबारा करूंगा तो काफी एक्टर से अच्छा कर लूंगा, पर मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला। पर मैं यहाँ जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि एक्टर्स के लिए वहाँ पर जो छूट होती है वो बड़ी खतरनाक किस्म की छूट होती है, क्योंकि उसमें कई तरह के डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है। और एक्टर को हैंडल करने का जो तरीका है, उसे समझाने का जो तरीका है, उसमें कई तरह की डिवाइस रहती हैं। कभी एक्टर अपने आप से बात करता है, अपने सेल्फ से बात करता है, कभी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक जो चरित्र को लेकर गुत्थियां होती हैं उसका भी खुलना होता है। और जो सबसे ज्यादा जो मुझे दिलचस्प बात जो मुझे याद आती है और जो मैंने इधर नाटकों में देखी है, वो करेक्टर की जो बॉडी होती है, एक करेक्टर का शरीर होता है। अमूमन हम जो देखते आ रहे हैं रटे पिटे नाटकों में, चरित्र ऐसे चलेगा, ऐसा खड़े होगा और ऐसे कपड़े पहनेगा, यहीं तक हम कवायद करते रहते हैं। और बहुत ज्यादा बात हुआ तो उससे कहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम वैसा करो। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चरित्र का एक अमूर्त शरीर बनाया जाता है, जो उसके मनोविज्ञान और उसके जो प्रोसेस चलता है, जो समझता है वो। मसलन गोरा के जो कैरेक्टर है वो कैसे बिहेव करेंगे, घर बाहर के जो कैरेक्टर है वो कैसे बिहेव करेंगे, और वही जब उमराव में पहुंच जाएंगे तो कैरेक्टर कैसे बिहेव करेंगे। सारे कैरेक्टर अलग अलग हैं, ऐसे ही सबका शरीर अलग अलग है। वो शरीर दिखता नहीं है, वो चरित्र जो इनविजिबल चीज है उसको बॉडी में लाना पड़ता है, तो वो एक आसान काम नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगा हर प्ले में अलग अलग प्रोसेस रहा है, अलग अलग रूप रहे हैं, और उसको सुलझाने के तरीके भी कोई एक तयशुदा तरीके नहीं रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है अनुराधा जी की जो एक्टर्स को हैंडल करने का तरीका है, वो समझाती हैं, अच्छी तरह समझाती हैं, और वो क्या चाहती हैं ये भी बताती हैं, और एक आइडियाज देती हैं कि इस तरह से आप उसको कैरेक्टर को पकड़ सकते हैं और कैरेक्टर से चिपक के नहीं रह जाना है, या उसका मूड नहीं प्ले करना है, जो अमूमन हम नाटकों में देखते हैं और देखते देखते बोर हो चुके हैं और कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, तो उसको तोड़ती हैं। एक तरह से कई बार एक्टर जो है उल्टी गिनती गिनता है। उल्टी गिनती गिनने से मतलब ये कि ये भी गलत है, ये भी नकली है, ये भी बनावटी है, इसके आगे क्या कर सकते हो। तो और दूसरी तरफ ये एक तरफ से पेंटर्स का, एक तरफ से म्यूजिशियंस का, एक तरफ से फोटोग्राफर का, एक तरफ से वीडियो मेकर्स का इतना दबाव रहता है एक्टर्स पर, तो उसके बीच में से एक्टर क्या करे। तो ये दो धारी तलवार होती है, एक तरफ एक्टर्स को दबाना, दूसरी तरफ एक्टर को उठाना कि तुम करो कुछ ऐसा। तो ये जो है एक तरह की बड़ी कठिन कवायद रहती है एक्टर के सामने। दूसरी बड़ी बात जो मुझे लगती है कि वो एक जो टेक्स्ट का जो मामला है, यहाँ पर आके इतना उलझा हुआ है कि खुद ही उलझाओ और खुद ही सुलझाओ। तो जो टेक्स्ट की जो लेयरिंग है वो बड़ी दिलचस्प है, उसमें बहुत जर्नी है, लेखकों से कैसे काम लेना है, उनसे कैसे रटा पिटा ना लिखें वो, और न ज्यादा लिखें न कम लिखें, तो ऐसा लिखें जो सटीक हो और जो मौजूद हो एकदम वैसा लिखें। तो वो जो कवायद है वो बड़ी श्रम साध्य है और बड़ी थकाने वाली भी होती है, और लेखक अपना सिर धुनते रहते हैं कि ये जो भी लिखो उसमें कुछ कमी रह जाती है। तो ये चीज भी है, उसकी गीतांजलि कुछ बता नहीं पाई, मुझे बताना पड़ा। तो मुझे बताना पड़ा उनके हिस्से का, क्योंकि हम दोनों ही इसके वो रहे हैं, गवाह रहे हैं कि जब सुंदरी लिखा जा रहा था तो मैं तो कॉम्प्लेक्स के हमारे जल बन जाता था कि इनसे ज्यादा लिखवा रही है, मुझसे कम लिखवा रही है। तो सारे अच्छे सीन से लिखवा लिए, मुझे दिए 2-3 सीन, पर खैर दैट इज। तो मुख्य बात यह है कि बड़े बड़े उपन्यास जिनको पढ़ते हुए पसीना आ जाए, उसको सरल भाषा में, लाइक गोरा, लाइक घर बाहर, ये लाइक उमराव, ये अपने समय के बड़े मशहूर उपन्यास है, पर इसको अंदर से एक नाटकीय ढांचा निकालना, स्क्रिप्ट निकालना, तो ये एक तरह का आर्ट भी है, एस्थेटिक्स भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, तोड़फोड़ भी है। तो इस तरह का पूरा एक आपका काम रहा है। उसमें एक्टर्स के लिए खूब चैलेंज रहते हैं और समय समय पर प्रतिष्ठित और अज्ञात गुमनाम एक्टर भी आते रहे हैं। दोनों तरह के एक्टर्स रहे हैं, एक तरफ उत्तरा वगैरह जैसे लोग भी रहे हैं, और मनवारी हैं, ये हैं, और हरीश। मैं ये कहना चाहूंगा
कि हरीश जैसे एक्टर या जितेंद्र शास्त्री जैसे एक्टर्स जिनकी एक्टिंग के दौरान हमने भाषा देखी कि पहले शुरू के नाटकों में वो किस तरह की भाषा में अभिनय करते थे, बाद में अभिनय की भाषा कैसी बनी और उसमें कितना आधुनिकता, कितना प्रयोग, कितना शिल्प, कितनी क्रिएटिविटी। वी हैव सीन द मेनी एक्टर्स चेंजेस, एक्टर बदले हैं, पहले एक भाषा में कर रहे थे तो आगे आगे। इसका मतलब है कि निर्देशक की जैसे लगातार हरीश ने अनुराधा जी के साथ में कई प्लेस किए हैं तो एक भाषा भी परिमार्जित हुई है, एक अभिनय की भाषा भी मिली है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि निर्देशक का और एक्टर्स का जो कोलैबोरेशन है बड़ा आत्मीय है, और जैसा होता है कि निर्देशक को अपने अभिनेताओं से लगाव होता है, वो लगाव इसी तरह का है अनुराधा जी का कि बदलते रहें, प्रयोग करते रहें और थोड़े से दुस्साहसी हों तो बहुत अच्छा है। अनुराधा जी, मैं एक सवाल है मेरे मन में जो आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कि यहाँ पर दिनेश भाई ने अभी बहुत अच्छे रूप से व्याख्यात किया और आपने अपने सारे इसमें बताया। मैं अलकादी साहब की अपनी जर्नी को याद करता हूँ तो सर हमेशा एक बात कहा करते थे, डू वन थिंग एट ए टाइम। 4 साल की पूरी ट्रेनिंग के दरमियान ये बार बार सर की जुबानी ये बात आती थी। आपके पूरे काम में जब आपने अपने काम को पेश किया और मैं मुसलसल आपके काम को देखता भी रहा, एक सबसे मुख्य चीज जो दर्शकों के दिल में और उनकी कल्पना में, भावना और कल्पना जो कहीं पे एक नाटक देखने के बाद वो अपने साथ ले जाता है और उसकी मासूमियत उसके साथ बरसों तक एक खुशबू की तरह कहीं रह जाती है। आप अपने काम में स्वयं इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगी इस मौजू के ऊपर? मुझे तो लगता है कि इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि क्या किसी नाटक के बाद रह जाता है वो तो शायद ऑडियंस के पास रहता है। हमारे अगर एक ग्रुप में क्या पास रहता है वो शायद फ़र्क चीज़ें हों। मतलब किसी परफॉर्मेंस के बाद हमें ये याद रहता है कि हमने किस तरह से एक सीक्वेंस में कितना स्ट्रगल किया था और वो शायद कभी बना ही ना हो और जस्ट परफॉर्मेंस के दिन बन गया हो। तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो हमारे लिए उसका रेजिड्यू क्या रह जाता है, पर मुझे लगता है कि हमारे लिए एक तरह से एक रेजिड्यू ये रहता है कि कोई भी सीक्वेंस हम जिस पॉइंट से शुरू करते थे वहाँ एंड नहीं होता, वो कहीं और जाके एंड होता था। और वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यूँ लगता है कि वो एंड किसी का प्रिडिक्टेड नहीं था। मतलब यूँ लगता है मुझे कि जैसे उत्तरा का वो बहुत लोकप्रिय सा हुआ था डायलॉग कि अब आप क्या कर रही हैं तो हम करवट बदलते हैं, तो वो हमें मुझे लगता है गीतांजलि और मुझे इसकी खबर नहीं थी कि वो इस तरह से रिसीव होगा, और वो इस कारण रिसीव हुआ कि वो स्टेज उस वक्त एक गोल्डन ह्यू में आया। उत्तरा खुद भी गोल्डन कपड़े पहनी थी, पलटी तो वो उसी में एक तरह से मिक्स ही हो गई, वो दिखती नहीं थी, उसके कारण वो डायलॉग का एक मीनिंग आया। तो मुझे लगता है हमारे लिए शायद यही एक प्रोसेस रहे कि हमें वो याद रहे कि हम एक पॉइंट से शुरू किए थे, पर जिस पॉइंट में हमने एंड किया वो हमारे लिए बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं था। और इसके लिए मैं ये एक ऐड करना चाहूँगी कि ये तेंदुलकर के 2 नाटकों में, जिसका भी मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, वो उसमें एक मेजर अनप्रिडिक्टेबल फीचर ये था कि विवान सुंदरम ने एक बॉक्सिंग रिंग बनाया था, जैसे मैंने कहा, तो उसमें एक्टर जैसे घुसे तो उन्हें कैसे हैंडल करे। एक घर और सोफ़ा और साथ में डिस्क्रिप्शन घर और सोफ़ा का है, सेट बॉक्सिंग रिंग है, तो आप उसको कैसे हैंडल करिएगा, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन से। I was student of Baroda, MS University Baroda. That time there was a narrative group, the narration group, the Sheikh Bhai. Place for people. Yeah. When I saw your display actually, that time, being a painter actually, I conceived that narration. What is the power of narration? And that narration gives somehow the very open interpretation to things to audience. And first time that play
came very close to painting, just as Nilima Behan actually, the way she painted, the way she designed, and maybe there's a composition also. There is a lot of, it's a miniature, it's a Mughal miniature touch, which Sheikh Bhai has a lot of reflection in his work of art. I will tell you frankly speaking, I was against narration group in Baroda when I was a student, because we used to think, oh, they are limiting some of the stylization, some of the things, some of the aesthetical values. But when I saw your play, it is third dimension came out from that, and there was a lot of chances of different interpretation. Maybe there is a one question, maybe the 10 question, but there is not a one answer, and there is a many multi answers and multi layer. So what you think actually, while doing actually this, are you in the same conclusion or not? Maybe it's a different than my concept. I'm really very grateful कि आपने ये कहा, क्योंकि एक तरह से ये हमारे लिए क्वेस्ट ही थी कि किसी भी नाटक में जिसमें इतना विजुअल मटेरियल हो, आप उसको सिर्फ एक ढंग से ना देखें. तो मेरा ख्याल है उसमें एक्टर्स के लिए चैलेंज ये था, जैसे मैंने आपसे कहा, कि ना वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में चले जाएं, ना ही ऐसे लगे कि वो पेंटिंग केवल बैकड्रॉप है, पर एक एरिया जिससे आप बातचीत कर सकते हैं. तो अगर ये वीडियो में लगा है कि एक्टर और बैक कर्टन और एक तरह से भूपेन का एक ट्रांसपेरेंट कर्टन पेंट करना, उन्होंने ये मुझसे कहा था कि अगर मैं पेंट करूंगा तो ऐसा होगा कि इमेज आर पार रहे, कभी वैनिश कर जाए तो एक्टर दिखे और कभी एक्टर के शरीर पे उनकी ड्राइंग दिखे. वो ये कहते थे कि जब मैंने सुंदरी को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे दिमाग में इस तरह से बैठे कि कोई उनमें मटेरियल नहीं था, ही वाज अ ड्रीम. तो एक तरह से वो कोशिश उन्होंने की और हमने उसके मुताबिक कोशिश की. पर अगर आपको ये लगता है कि एक तरह से नैरेटिव एक ही डायरेक्शन में नहीं गया, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है. थैंक यू. मेरा भी दो सवाल है आपसे कि आप एक सफल निर्देशक हैं और सफल प्रशासक भी हैं और इतने सारे लोगों के साथ काम किया है. कितना मुश्किल होता है मैम कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालती हैं और फिर निर्देशन संभालती हैं, तो इसके बीच में कोई ऐसा कभी होता है कि जब आप कभी परेशान होते हैं इन सब चीज़ों से अलग अलग? इस पे आप मुझे नहीं शुरू करें तो बहुत बेहतर होगा. दूसरा सवाल है कि आपने दिशांतर से काम शुरू किया के साथ, और उन्होंने मौलिक हिंदी नाटकों की शुरुआत किया था. आपका वो कभी आपने मौलिक नाटक, हिंदी के मौलिक नाटकों को नहीं छुआ है, इसकी वजह? नाटक, मौलिक हिंदी नाटक को शायद नहीं छुआ, पर उपन्यास को, अब उर्दू उमराव को क्या मानेंगे आप, उपन्यास तो मौलिक मानेंगे उर्दू, पर उर्दू हिंदी का हम इतना डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते. और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे सुंदरी की ऑटोबायोग्राफी जो है वो गुजराती में लिखी गई है, पर उसकी जो एक तरह से एको है वो बहुत सारी भाषाओं में, मराठी में भी बाल गंधर्व की उसी टाइम या उसी किस्म की लाइफ हिस्ट्री है. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक कारण से ऐसे हुआ होगा, पर शायद ये जितने क्लिप्स मैंने आपको दिखाए उसमें ये था कि कोई एक खास आइडिया जिसके साथ लेके बातचीत कर अपने आप से करते हैं, ग्रुप से करते हैं, एक्टर से करते हैं, उससे चॉइसेस बंधी हैं. और जो NSD में स्टूडेंट्स के साथ काम किया है उसकी चॉइसेस सिलेबस या एक तरह से कौन सा टेक्स्ट स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है वो उससे कनेक्टेड है. पर बाकी चॉइसेस इस किस्म से हैं कि हमें जब अगर जेंडर पे काम कर रहे हैं तो इस किस्म के टेक्स्ट लें जो जेंडर के बारे में बातचीत करने का मौका मिले, उनमें ये कनेक्शन था. और टैगोर करने का एक मैंने मेंशन नहीं किया, बट टैगोर करने का एक रनिंग इंटरेस्ट इसलिए रहा कि टैगोर के विमेन कैरेक्टर्स, जब हमने पहला काम शुरू किया था टैगोर में, तो हम गीतांजलि और मैं बात करते थे, तो हम ये बात करते थे कि विमेन के लिए सोलिलोक्वीज बहुत कम है.
और वो सोलिलोक्वीज हम कहाँ ढूंढें तो टैगोर में मिलती थी। तो इस कारण टैगोर के काफ़ी टेक्स्ट किए। वैसे ये सवाल कि आपने कोई हिंदी का मौलिक नाटक नहीं किया, अभी तनवीर से भी पूछा जा सकता था, पूछा गया था। ऐसे बहुत सारे निर्देशक हैं जिन्होंने संभवतः प्रसिद्ध मौलिक नाटक न किए हों और मौलिक टेक्स्ट तैयार करवा के किए हैं। और उनमें से कुछ का जिक्र अभी अनुराधा के संदर्भ में भी हुआ। बहरहाल 8 बज रहा है और आप सबको भी मेट्रो वगैरह जो भी पकड़ना होती है वो पकड़ना ही होगी और मुझे एक ट्रेन पकड़नी है इलाहाबाद जाने के लिए। और तो बहरहाल आप सब यहाँ आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। ये एक संवाद श्रृंखला है जो हम चलाए रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से कृपालु रहेंगे और कठिनाइयाँ इत्यादि जो हैं यातायात इत्यादि की और दिल्ली में प्रदूषण की और किसी के बगल में बैठने की इत्यादि उनको लांघ कर आते रहेंगे हमारे निमंत्रण पर। अनुराधा जी के हम बहुत आभारी हैं और उनके रहना भी, जिन्होंने 2 शामें हमारी अपना नाटक दिखाने के बहाने हमारी जिंदगी में भी थोड़ा थोड़ा नाटक पैदा किया। हालांकि किस तरह का किया ये कौन जानता है, कौन क्या ले जा रहा है। हम जयश्री जी के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारी एक पुस्तक का लोकार्पण किया। धन्यवाद।